Hello dear friends, I am Govind Lohia and today I am going to demonstrate how to conduct exam on Google Classroom. No doubt we are in the pandemic situation, and in this pandemic situation almost all the education institutes are closed down, and because of this we need to conduct the exams, and for that there is no such platform to conduct the exam. So Google Classroom is one of the platform in which we can conduct the exam with confidentiality. So for that reason, what are the requirement, how we are going to conduct the exam on Google Classroom, how the students are going to submit their answer sheet. You can conduct the exam not only in the MCQ form but also in a written, that is long answer and short answer question form. So for that reason I am going to demonstrate how to conduct exam on Google Classroom. This can be applicable for entire that means not only for pharma profession but for any stream of the subjects. You can conduct the exam through Google Classroom. So let's start with the demonstration part. Go to the Google. You need to sign in into your Google account. For conducting the exam, it will be beneficial that the Google account is created by exam section of school or college. So for demonstration purpose I am going to show you the from my Gmail account. You need to sign in into your Gmail account and then type Google Classroom. Now click on this, go to the classroom. Consider that from exam on behalf of exam section I am going to create a classroom. So go to the classroom. Go to classroom part. Now on the topmost side, if you have created a Google classes, it can appear in this window. If not, the window will appear as a blank. You can create a plus sign. On behalf of exam section I am going to create a class, accept the terms and condition and continue. The class name is sessional exam or exam 2020 and 21 section. Say for this is first year. B.Pharm. Subject all, whatever it may be, room GNCP or Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. So this is, I have filled all the data. This is required, that is what exam 2020-21 for section B.Pharm first year, and I am just going to create it. So it will take a time to create the class. So you can put in exam, you can put sessional exam, you can put any whatever you want to, which kind of exam you want to conduct. So this is exam 2020 first year B.Pharm first year. Now go over here. What you have to do, because we have created a class for entire first year. Now I just want to upload a photo और क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स 1, और जो लोग स्कूल से बिलोंग करते हैं उनको अगर ये एग्जाम का, दैट मीन्स हमने बना लिया है एग्जाम का क्लासरूम, तो उनको इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का या ड्राइंग का ऐसे सब्जेक्ट के पेपर अपलोड करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द क्लासरूम पार्ट. This stream is just like a social media platform. Whatever you are going to share over here, it can be appear into the student window. Student can also comment in a stream section, like I just want to share with student that welcome to the exam class. So I can post it. It can be appear in a student so that it can be
exactly it can be shown into the student window, and student can also reply to this. Now come to the classwork part. This is much more important because हम लोग यहाँ पर हर सब्जेक्ट का एक एक फोल्डर बनाएंगे सो दैट स्टूडेंट उसी फोल्डर में जाकर या उसी टॉपिक पर जाकर आपका क्वेश्चन पेपर देखे और उसमें आंसर शीट जमा कराए. सो यू जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट. आई रिपीट, गो टू द क्लास वर्क सेक्शन, click on the create section, click on the topic first. You need to create a topic. So whatever the Google Classroom is created by on behalf of exam section, right now the entire activity is done by exam section. If I am the exam in charge, मैं एग्जाम इंचार्ज हूँ कॉलेज का, और मैं मेरे इस क्लासरूम में सभी फर्स्ट ईयर के टीचर्स को ऐड करना चाहता हूं. सो हाउ कैन आई एडमिट द टीचर्स टू द क्लास? हमें एक बहुत सिंपल सा टास्क है. हमें पीपल सेक्शन में जाना है. पीपल सेक्शन में राइट नाउ ये मुझे बता रहा है कि एक ही टीचर है. राइट नाउ टीचर इज डॉक्टर गोविंद के लोहिया, एंड आई एम जस्ट एडिंग अ टीचर. फॉर सेक of exam I am adding a teacher. You need to put over mail ID of the co-teacher. Just I am adding a teacher Lohia Anjali. Anjali Lohia 19 as my co-teacher. I am clicking this and I am going to invite Anjali Lohia. So if I send the invitation to Anjali Lohia, then Anjali Lohia, being a owner of this class or being a generator of this class, I send as many as invitation to teachers through mail, and teachers can join through simple by clicking the mail invitation. So I request Anjali Lohia to join this class. Meanwhile, you can add one more teacher to another teacher to this class, so that let's request Anjali Lohia first to join this class. Okay. Now you can add as many as teacher you want, because in first year there might be 4 or 5 teachers are going to teach. For school purpose, in first standard there are some English teacher, math teacher, and drawing teacher. All these are teachers. So आपको इनके मेल आईडी लेना है, और मेल आईडी लेने के बाद इनके मेल आईडी यहाँ डालना है और इनको इनविटेशन भेजना है. जैसे ही इनको इनविटेशन जाएगा, वो इनविटेशन को देखेंगे, इसको क्लिक किया जाएगा, दे एक्सेप्ट इट. वंस दे एक्सेप्ट इट, द व्हाटएवर दे अपीयर्स ओवर हियर. अभी तक अंजलि लोहिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी एक्सेप्ट कर लिया. नाउ अंजलि लोहिया इज माय को टीचर ओवर हियर. नाउ you can at any time you can email the Anjali Lohia, you can remove the Anjali Lohia, you can remove or make a class owner to the Anjali Lohia. So this is very simple task. You can add teacher to your exam 2020-21 first year as a co-teacher, and right now after adding a co-teacher, or make sure that whatever your first year teacher are already added into your exam class, then ask them to go to the classroom and create a topic. In that topic, let us see, I am teaching a pharmaceutics 1. Pharmaceutics 1, I have created a topic. This is add topic. So it shows over here that is pharmaceutics 1 is created. Now I just want to create a topic, another topic. Say in first year I think so, human anatomy and physiology.
HAP, add it. Let us see another topic. I just want to add chemistry. So these are the topic I have created and I have added to the in the classwork section. I repeat, go to the create, add a topic. Before addition of the topic, you must add or send an invitation to your all co-teacher which are going to be conduct exam in that exam classroom. You must add them as a co-teacher. So you have created all the topics in that. Now consider pharmaceutics exam is pharmaceutics teacher is already in the classroom and pharmaceutics exam is on the say today is the 9th of June and pharmaceutics exam is on 10th June. What we have to do फॉर स्कूल पर्पस हम लोगों को सिंपल, मैं रिपीट करता हूँ, क्रिएट में जाना है और आपको आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स बनाना है, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फॉर 11-12 फिजिक्स, वॉट एवर इट मे बी, ड्राइंग. यू कैन क्रिएट अ टॉपिक्स. टॉपिक बनाने के पहले आपको पीपल में जाकर आपको आपके जितने भी टीचर्स है जो कि एग्जाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको इनविटेशन भेजना है. यहां से टाइप मेल एड्रेस और उनको इनविटेशन भेजिए, उनको ज्वाइन करने बोलिए क्लास को. वंस दे ज्वाइन, आस्क देम, एक बार वो ज्वाइन होने के बाद उनको बोलो कि आप आपका टॉपिक क्रिएट करें. टॉपिक इज नथिंग बट अ सब्जेक्ट नेम. जैसे ही उन्होंने सब्जेक्ट नेम बना लिया, अब आपको क्या करना है, जैसे सुटिक्स का आज मेरा 9 तारीख है और 10th को मेरा पेपर है. सो आई कैन गो टू दी create section and go to the assignment. Now write over paper 2 pharmaceutics 1, or you can say sessional 2 or second sessional or class test 2. Rather than paper, it will be more easy. class test 2 ऑफ फार्मास्यूटिक्स 1. यहां पर आप जो चाहे वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हो स्टूडेंट्स को, वो रिगार्डिंग सबमिट, दैट मीन्स राइट द आंसर ऑन पेज plain on paper and scan through any scanning app and upload to the classroom within 2 hours. So you have instruct them regarding the instruction part. Apart from that, आपके क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन रहेंगी वो तो रहेंगी, आपका एक जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें, और उसके अलावा अगर आप यहां पर चेंज करना चाहते हो तो यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो, यहां पर भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो. दैट मीन्स ड्रॉ अ प्रॉपर लेबल, डायग्राम एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आप यहां पे भी दे सकते हो, मगर आप यहां पर ये कर लिया है, पेपर बना लिया है आपने, तो यहां से आपको एक वर्ड फाइल, जैसे ही हम लोग पेपर आपका, इफ इट इज इन अ गूगल ड्राइव, you are going to share a link of WhatsApp. If you are going to share a file, so you can select a file. If you have typed paper in your PC, select file. I'm just going to upload any sample paper over here. Now consider, just wait.
let us consider this is paper, this is PDF Word document I have prepared as a question paper, and I am going to upload it. So I have uploaded the question paper. It shows the uploading. Now it can be viewed over here, that is the question paper. You can rename the Word file according to class test 2 pharmaceutics 1. Here I am just selecting a random selection, and that's why it appears attendance 1920. You can rename your document or create your document and upload over here. तो जो स्कूल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी आपके पास जो पेपर है, आप सिंपल एक हाथ से हैंड रिटन पेपर का फोटोग्राफ लेकर वो भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। ना आपने हैंड रिटन हो, आपके पास लैपटॉप से आप एक वर्ड फाइल बना के वो अपलोड कर सकते हो। इवन आप उसका PDF भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। एंड स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल, यहाँ एक ऑप्शन आता है, स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट द फाइल एंड मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। सो सिलेक्ट over here student can only view the file so that any student can able to, that means इसके अंदर कोई की एडिट नहीं कर पाए, तो हम लोग सिर्फ इसको स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल क्लिक करके छोड़ देंगे। राइट नाउ आई रिपीट, in a assignment section put a title of your exam, then instruct the student and go ahead. I know because in the pandemic situation we know that there are certain connective issues, so I found that ki tomorrow is my exam and maybe tomorrow there will be a network issue. Can I assign it? Yes, we can assign or schedule the exam from here. You can schedule exam from here, that is schedule on 10th June, and what time you preferable, it is usually 11 AM is the exam time for our college, so that I can put 11 AM. Most of the schools and college are in morning shifts, so they can put according to their timing, that 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, and schedule it. This is regarding schedule. If I just want to assign right now the exam, I can click on assign. It can be right now assigned to the student, entire student. So this is for the assigning purpose. Now this is all students. Exam is for according to PCI syllabus, this is for 30 marks. According to old syllabus, 20 marks. Yes, due date you can daily, that means you can add a due date because it gives a message to student, that is your due time is coming, you have to submit your assignment. Not only this, after due time student can also able to submit the assignment, but with the late mark tag. That means student can get notification that you have submitted the assignment late. Not only student, the teacher also get the notification that so and so student submitted the late. So add a due time 10, time we have put 2 hours, that's why it is 13, 11, because I am scheduling at 11, 13. That's all about this. Before going to assign, you just created a topic over here. This paper is of pharmaceutics, so I can click on the pharmaceutics in that section, in topic section in pharmaceutics, so that whatever the students going to submit the assignment, it appears in a topic pharmaceutics. It not appears in a randomly in a entire class, it appears particularly in a pharmaceutics. So this will be add-on point. Okay, for school, अगर आप यहाँ पर आपका जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम है, आप डाल दीजिए यहाँ पर। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, दैट मीन्स शेड्यूल का तो हमने यहाँ से देखा था कि हम लोग इसको शेड्यूल कर सकते हैं। आप इसमें टाइम भी डाल सकते हो कि आपको ये असाइनमेंट या क्वेश्चन स्टूडेंट ने कब तक सबमिट करना है। उसके बाद अगर स्टूडेंट सबमिट करता है तो स्टूडेंट को लेट मार्क दिखता है, दैट मीन्स उन्होंने लेट जमा किया है, और टीचर को भी दिखता है कि ये स्टूडेंट्स है, इन्होंने ये असाइनमेंट लेट सबमिट की है। और उसके बाद आप टॉपिक पे क्लिक करके जो भी आपका टॉपिक हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ड्राइंग, आप इसको क्लिक कीजिए, सो दैट व्हाटएवर जो भी आंसर शीट आ रही है स्टूडेंट की तरफ से, असाइनमेंट आ रही है,
वो सीधा की सीधा यहाँ पर आपको इसी सेक्शन में दिखेगा, असाइनमेंट फार्मास्यूटिक्स 1 या आपका इंग्लिश का या हिंदी का या जो भी फोल्डर हो उसके अंदर दिखेगा। नाउ आप इसको असाइन कर दीजिए। अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, असाइन करना है तो असाइन भी कर सकते हो। और आप स्ट्रीम में आइए, आपको यहाँ दिखेगा डॉक्टर गोविंद लोहिया पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट क्लास टेस्ट 2 फार्मास्यूटिक्स। जैसे ही इस पे स्टूडेंट क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखेगा कि बिकॉज हमारे क्लास में अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिखेंगी नहीं। दैट मीन्स आपने किसको असाइन किया है, 0 नंबर को, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं है। जैसे ही आपका पूरा क्लास इसको ज्वाइन कर लेगा एज अ स्टूडेंट, मैंने आपको शो किया था कि एज अ टीचर कैसे ज्वाइन होता है, वैसे ही यहाँ एज अ स्टूडेंट जैसे ही लोग ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ दिखेगा दैट 50 स्टूडेंट्स आर असाइंड एंड none of the student handed in 0. if 1 or 2 handed in, it appears यहाँ पर आपको दिखेगा यस 3 स्टूडेंट ने हैंड इन किया है, 57 बाकी है, असाइन है। ऐसे ही ये यहाँ पर चेंज होते जाएगा और यही से आप उसको ग्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। जैसे ही जिन्होंने असाइन किया तो आपको दिखेगा कि हैंडेड इन, आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उनकी असाइनमेंट आपको दिखेंगी और असाइनमेंट को आप मार्किंग कर सकते हो। हाउ टू एनरोल अ स्टूडेंट, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट फ्रॉम स्टूडेंट साइड, तो उसके लिए आप मेरे और वीडियो बने हैं, वही वीडियो आप रेफर कर सकते हैं कि आपको कैसे स्टूडेंट को एनरोल करना है या स्टूडेंट को कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, इसके भी वीडियो बने हैं। तो आप वो वीडियो प्लीज रेफर कीजिए। होप आपके मैंने यहां तक सभी डाउट क्लियर किए हैं। आई रिपीट अगेन, this is stream section. You need to go to the classwork section. Before going to classwork, you add a people because this group is created by the exam section or exam Gmail account. You need to invite the teachers which are going to be a part of this exam. You just add a mail ID of them and invite them. They are join. Once they join, ask them to create a topic in that classwork section. Once they created a topic, now in that topic they just create a assignment. In assignment over here they need to select a topic. So this is all about how to create assignment and how to conduct exam through this Google Classroom. अब यहां तक तो मैंने क्लियर किया। जैसे ही आप ग्रेडिंग करना शुरू कर दोगे तो यहां आपके स्टूडेंट के मार्क्स सेक्शन में दिखेंगे। तो आपको ये मोबाइल में सिर्फ स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल दिखता है और आप अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो देयर इज वन मोर टैब, दिस इज मार्क्स टैब अपीयर। आप मोबाइल से भी इवेल्युएट कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी इवेल्युएट कर सकते हो। यहां तक कि मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जाम रूम से गूगल क्लासरूम सेट करना है, बाकी टीचर को इन्वाइट करना है, टॉपिक क्रिएट करना है और आपका एग्जाम का पेपर पोस्ट करना है। आप अभी भी असाइन कर सकते हो और आप शेड्यूल भी कर सकते हो कल या परसों के लिए, और बराबर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने शेड्यूल किया है उसी टाइम पे ये स्टूडेंट को दिखेगा, उसी टाइम पर दिखेगा। सो नथिंग टू वरी, ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड बाय गूगल इटसेल्फ। नाउ कम टू द आवर प्रेजेंटेशन पार्ट। This is how to join Google Classroom on mobile. So this is for the student side. They need to go to the Play Store. In that Play Store, they need to type a Google Classroom. In that Google Classroom, they need to search for Google Classroom. Because I have already installed, that's why it shows open. Otherwise, they need to install. App is installed. It is look over here, app. Now click on the plus sign on the top side of the top right hand side of the app, join class and create class. They need to join class. Join class, they need to provide a class code. So how to give a class code? Again, I am showing you how to give a class code. Come to your class. This is your class and this is class code. Over here on a very first, on a stream side, you can simply display part in that class code. It is given class code.
you can copy the class code and post to the WhatsApp group of students so they can join easily. So it is very easy to join them through this portal. You can portal, okay. Otherwise you can, in a people, you can invite through a mail. This is a very proper channel to invite the student through a mail. You can address, you can put the mail address of the students and you can invite. Otherwise you can go to this part stream, this is class code, and ask them to join the class by using this class code. Okay, now again come to the our presentation part. So you have provided a class code. They need to join with a given class code, join by the class code. Now as soon as they join, they see there is one assignment. Okay, this screen appears. Now click on the new assignment or assignment which already created by Pharmaceutics 1. This assignment is appears. Now by clicking the assignment, they see whatever the general instruction, how many points assignment is there. Okay, and now the window appears just like the student need to scroll down. The window appears like this one, your work, add attachment and mark as done. For that reason I have prepared one more video how to upload assignment, but still I am going to show over here. Now what student have to do, they need to scan their entire answer book through Adobe Scanner or through Cam Scanner, convert this into the PDF form and upload this into the over here. Once they uploaded in a add attachment, this appears like this one. Once the uploaded attachment, then they need to click hand in. Once they click hand in, the entire answer sheet is submitted to the class teacher and it appears unsubmit over here. That means student successfully submitted the assignment. So this is all about Google Classroom and exam. So thank you for watching this video. I hope I have cleared your all doubts. If you have any doubt regarding the conduction of exam, you can call me, you can WhatsApp me, or you can comment in my video box. Okay, thank you, thanks again.